मशीन जो आज हम करेंगे वो है हमारा सेंस, जिसकी आईपी एड्रेस है 10.10.10 जो कि हैकडॉग्स की मशीन है, और मुझे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे पहले पिंग कर रहा हूँ मशीन को चेक करने के लिए। Yeah, so I'm getting a detail value. Nice. So let's start with the map scan. So over here, the first thing जो हमें करना है वो सर्वर को स्कैन करना है उसके आईपी एड्रेस को, बट यहाँ पे एक्चुअली सेंस दे रखा है। सेंस है क्या, पहले वो पढ़ते हैं। Not common sense. This is giving, let's see the source code. Source code में देखते हैं sense. Okay, they have given theme PF sense. Okay, PF sense. So it's the world most trusted open source firewall. PF is one of the open source firewall router computer software distribution based in on free BSD. This is a different architecture of Linux. And this one is basically installed on your physical computer or virtual machines to make a dedicated firmware and network. Okay, so that's great. So over here, let's it's gonna complete on 23 seconds more. तो ये हमारा एक फायरवॉल है, तो आज हम देखते हैं कि फायरवॉल का गेटवे हम टेस्ट करके देखेंगे। सो एक एक करके सारी चीजें करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डर बस्टर लास्ट में करूंगा, ठीक है। So through this sense, we can identify what other ports are being open and what other services are running. So over here, we're gonna try to look each and every files on the server side. And मैं आज GoBuster यूज करूंगा dir डायरेक्टरी के लिए, तो मैं पहले से इसे फिल कर देता हूँ। Okay, sorry. So ये HTTPS है पहली बात तो। So we have to put HTTPS. हाँ जी बोलिए। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा ठीक है आवाज, अब सही है सबको? हाँ जी सर सही है। हेलो सही है सही है। जी बोलिए। ओके। So I'm going to take the medium.txt file and I'm going to use -t which is your threads 20, but इसको start करने से पहले मैं अपने scanning को wait कर लेता हूँ, and it has been 81% till now. So we are simply doing a script scan plus the SV, which is your service plus version, identifying the number of ports over there so we can use it for services which is running in the specific server. So we're going to look for each and everything one by one. Hmm. 93% has been done. So we should check the connectivity also. So the connectivity is good, so we can try to manipulate. But the most important part, we have to check each and every services, and we have to wait for the nmap. And the scan has been done. And over here, I can see port 80 is over there, and there is a version of port 80, which is your light FTPD version. So they have seen did not follow redirect the client request. There's an error with the script execution failed with the debug, and they have given port 443, which is your OpenSSL TLS randomness, so you can say. Okay, so we have only port 80 and the 443, and we have some version over here. So I'm going to look for the vulnerability for this one. So search exploit. We don't have that one.
So over here हमारे पास बहुत सारी vulnerabilities है, multiple code execution, denial of service attack and information disclosure vulnerabilities. और इसमें कुछ fast CGI header remote code executions दे रखी है, plus arbitrary code executions दे रखी है यहाँ पे, mode user information disclosure और source code disclosure जो कि हमारा BSD है. So I'm going to check this one later on, but मैं पहले एक काम करता हूँ, Derbuster के साथ एक directory crawl कर देता हूँ, and the most important part we have to specify the directory type. So sorry, I have to specify with a U, -u, the URL. Error running our Derbuster unable to connect to the HTTPS, invalid certificate, X44 cannot validate the certificate. Okay. So what is the problem over here? Error again. So let's check Derbuster. Okay. Okay, so Derbuster is facing some errors. So instead of the Derbuster, I guess I'm going to use Derbuster over here. So number of threads, user share, search for the word list, Derbuster, let's use medium, B request बता देते हैं और let's try. So we are getting some files from the server side. So over here, we are just simply scanning for the PHP files, and on the server side, I can see lots of files over there, which index.php, states, help, edit, license.php. एक को open करके देख लेते हैं. Okay, this was nothing. Execution, there's some JavaScript over here, some JS files, CSSRF, JS Magic, status. Again, there is nothing. Execution.php. There's nothing. Tree.js. Okay, there was a file of js.query. License.php. I guess I have to log in first of all to get the server. Package. So remember one thing, when you're doing a fast scrolling process, you should specify the file extension over here. So sometimes they reveal PHP data, sometimes they use GIF, some other file structures. आपको हर एक एक्सटेंशन को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जब आप कोई फाइल को क्रॉल कर रहे हो. कभी कभार क्या होता है कि अगर अभी किसी हम सर्वर को क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ टेक्स्ट फाइल्स रिवील हो जाती है या कोई जेपीजी फाइल्स रिवील हो जाती है या आपकी गिफ फाइल्स रिवील हो जाती है कभी कभार. सो ओवर हियर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टॉलर 3 जावास्क्रिप्ट थीम्स, कुछ फाइल्स दे रखी है.
So attacker क्या करता है वो basically wait करता है कि how we can simply gain more information about the target. So what we're gonna do over here, we can see only the port 80 was there and the version. And we can wait for others to come. You can see scan has been done. Side में अगर मैं Nicto चलाऊँ तो Nicto can also be used for identifying the loopholes. So Nicto icon H the IP address. Root page redirect to the HTTPS file, and the server has light TPD 1.4.35, and they are using some other files over there. Anti-clicking, X-frame options, header is not present. So we're gonna try to embed more and more services. So it's not getting any files from server side. So मैं इसको stop कर देता हूँ और backend में जाने के बाद हम लोग कुछ multiple file extensions डाल सकते हैं. So there should be some files over there. So you can write text files, some access files, some JPEG files. You can try to exploit, and you can add multiple extensions. For example, जब मैं यहाँ पे Webalizer use कर रहा था, so मैं देख सकता हूँ कि web server light daily दे रखा था, and the programming language they're using is PHP. For this case, I can simply start the scanning again. So let's see what we can find. So over here, I'm going to pause the PHP and I'm going to look for the txt access file or JPG files. So you can see now it's looking for the text files. So over here, we can see change.log.txt file is there. Let's wait for more. So, or we can simply open this file. Security change log. So issue, there was a failure in updating the firewall. Manual patching is there. Required. Mitigated 2 or 3 vulnerabilities has been patched. Timeline, the remaining patches will be installed during the next maintenance of Windows. So over here, we can see that we have a changelog.txt file, and we are going to wait some more files. So it finds the JS file also. There's a system.php file. It's also nothing like that.
So he find only one file on the txt file, which is 200, and let's wait for only for the txt file. Let's see how many files we can find over there. So let it be complete over here. So let's look for the PS Sense firewall. PF Sense firewall, you can say user directory. Let's look for user directory over there. So over here we have access the PSense system menu and select the user manager option. So NTP server, it's not okay. Do we find something till yet? Message.php.txt files, anything? Okay, all we find is a txt file. So how to connect with the LDAP solution authentication server ID file. Because over here you can see that we didn't find some relevant data. So for that case, I'm going to start this machine again, but now I'm going to look for some txt files. So over here, let's clear it up and dust. So over here, I'm going to put the URL, number of threads according to your own need, and मैं वो browser का dictionary दे दूँगा. User share word list, the Western medium, और यहाँ पे देखते हैं कि text file और मिल जाए हमें.
So we are going to look for the files one by one. So again, यहाँ पे change.txt मिला. सर ओएससीपी एग्जाम में ऐसे एक्सेस लेते हैं इंटरनेट का कुछ हाँ. सर्च करने का. हाँ जी. अब ऐसे जैसे हम गूगल पर जैसे सर्च कर रहे हैं ऐसे पीएफ सेंस वैसे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है. आप कर सकते हैं. अच्छा, मतलब कोई भी पेलोड पे डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं ना. पेलोड डाउनलोड करने के लिए वो थोड़ा देखना पड़ेगा. अच्छा. User 2 redirect client request section. ये लॉगिन ही ओपन हो गया. तो यहाँ पे this was a failure in updating the firewall and then pen testing. To more 3 was recharge. Okay. Hmm. There should be a file or something over there. So we are waiting for a file. There's a change.txt file. It's taking too much of time over here. Okay, so we need to crawl. There would be a file, another file. So we have to wait for that file. Calling 302. So let me tell you one thing. You will get another file from here, and the file name would be like system users files. You will find a file like this on that specific directory. जब आप स्कैन करोगे तो ये इस तरह की फाइल आपको मिलनी चाहिए यहाँ पे. And we are just waiting for that.
and it's gonna take some time because the scan has been done. See, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ इंस्टॉलर के बाद यहाँ पे JS फाइल, यहाँ पे TXT फाइल दे रखा है, यहाँ पे सारे यहाँ पे JS फाइल्स है। तो अगर आप ये फाइल आपको वहाँ पे मिलनी चाहिए सिस्टम यूजर डॉट TXT, जिसमें सारे के सारे यूजर्स होंगे आपके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ आपको। You will get a system.txt file from the server side, जो कि आपके यहाँ पे आएगा। Is it okay, Dhruvesh? हाँ जी सर। Is it okay? Is it understandable, Lakshmi? Lakshmikant? Okay, you will get a file from here on the directory, but it's taking some time over here. So you can simply see the file was system.user.txt, which contains some user. So example, they have a username Rohit and they're saying password is company default. So over here, if I open the IP address, the username is Rohit, okay. But what will be the Sense company default password? So let's look for the Google. So PF Sense default password is. So the default credential for PF Sense firewall is username, admin, and password. Username is admin and the password is PF Sense. Okay. So over here we have that the username was admin and the password is PF Sense. The PF Sense is the default credential. So let's try PF Sense over here. And yes, the password was correct. Some of the applications they are using default credentials that can be lead to disadvantages, and we can see we are on the firewall right now. Status dashboard. So over here we can see the name is PFS local domain. The version is 2.3 release version. Okay, we have the version over here with the psense, which is 2.2.3. As a security analyst, when we're doing a pen testing part, we have to check the version also. So over here we have the version 2.3.1, which is the PFS Sense, and we have platform PS Sense, and the CPU they're using AMD. Uptime, you can see all the things that are working over there. So as a security analyst, सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या है मेरा कि सबसे पहले तो उसकी version के through identify करना पड़ता है. So मैं यहाँ पे Google open कर रहा हूँ. PF Sense and the version 2.1.3. Yes, सबसे most important है इसका version exploit निकालना. So मैं अगर यहाँ पे देखूँ यहाँ पे PF Sense के according to vulnerabilities जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2.4 web PHP exploit. तो सबसे यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्जन दे रखे थे आपके 2.3 AMD64 पैकेट ट्रांस, यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस RID ग्राफ इमेज डॉट PHP, जिसमें लिखा है कमांड एग्जीक्यूशन अटैक. सो कमांड एग्जीक्यूशन अटैक में सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज को हम ट्राई कर सकते हैं. अगर मैं इसके कोड को देखूं तो इसमें लिखा है एक्सप्लॉइट टाइटल PS टेस्टेड ऑन फ्री BSD, ठीक है.
और यहाँ पे कोड दे रखा है हमारा, तो यहाँ पे दे रखा है 2.3 स्टेटस RFD कोड. This secret was written on the reverse shell, specified listener address and the port. एंड यहाँ पे कुछ R host दे रखा है जो कि रिमोट होस्ट, L host listener, L port listener, username and password. ओके. और यहाँ पे कुछ कमांड्स दे रखी है. Payload octa characters, login to the login URL R host. So यहाँ पे हमारे पास एक पूरा एक्सप्लॉइट बना हुआ है ना. तो ये एक्सप्लॉइट क्या कर रहा है, एक ऑथेंटिकेशन यूजर क्रिएट कर रहा है उसके साथ. बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली CSR टोकन से ऑथेंटिकेट भी कर रहा है URL के थ्रू. और ये वल्नरेबिलिटी किसमें है आपकी, R host, victim IP एड्रेस और आपका जो पेलोड. सो एक बार इसको डाउनलोड करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं. So this is a Python script where, okay. So LSI and all. So Python, पहले तो देखा भाई कि कौन सा Python फाइल है. So 4.3. ओके, नॉर्मल पाइथन स्क्रिप्ट है. चलो ठीक है, फिर पाइथन से चल जाएगा ये. पाइथन 4.3. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स. पाइथन 2, पाइथन 3. ओके, it's showing some error over here. So we are facing some errors. So I'm going to look for GitHub script. Rapid 7. Okay, we have vulnerability with the help of Metasploit also. See, we can use Metasploit to gain unauthorized access. So over here, PFS execution. So this is also an exploit that we can use. Arbitrary core execution और PFSM और 2.2.6. अच्छा, ये इसमें भी चल जाएगा. तो इसमें मैं यूज करके देखता हूँ. Now the most challenging thing is to simply crack. So Python file, username, or okay. So over here I guess the listener IP address and the listener port, the target IP address or the URL. Okay, so basically मैं करना क्या इसमें changes. Authentication non-authenticated user, ठीक है. Uses netcat or MSF. Set the list.
if you want to use proxies URL, okay, तो यहाँ पे दे रखा है proxy URL नहीं, ठीक है. So यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन आरबीटी कमांड एग्जीक्यूशन दे रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम रोहित डालना पड़ेगा लगता है. और यहाँ पे आईपी एड्रेस किसकी डलेगी, आई थिंक मेरी डलेगी, जो कि है 10.10.14.18. और पोर्ट नंबर कोई भी ले लेते हैं, 448 ले लेते हैं रजिस्टरिंग के लिए. और टारगेट आईपी एड्रेस, हमारा जो टारगेट आईपी एड्रेस है वो है 10.10.60. So let's see this will work or not. Okay, so we're going to use Python, pf execution और netcat. But यहाँ पे netcat मैं एक्टिवेट कर देता हूँ. So netcat numeric decimal code 44448. यानी कि रिसीव करने के लिए. चलो चेक करते हैं काम करता है. So it is basically using Python 3. और मैं देख सकता हूँ कि ये कनेक्ट हो गया. So who am I? We can run command execution. Which? Python. So हाँ, server Python है. Yes, so we're gonna use this one. Yes, so this was the technique that we can use public exploit and some more information gathering because that server was not running. इसमें कुछ error आ रही थी, so that's why it didn't run. And this PS execution from GitHub से कुछ यही स्क्रिप्ट चल रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे. So you can see who am I, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे. So over here we can execute our commands. Yes. So pwd dot lsf and all, and we can command execute over here. So who am I? I am root, and we can read the flags. Is it okay, Durvesh? Yes, sir, बिल्कुल. सर ये डबल डॉट स्लैश किया वो रूट का प्रीवियस एस्केलेशन किया ना? ये हाँ. उस रूट के डायरेक्टरी में जंप करने के लिए किया, क्योंकि पहले से मैं रूट था. ओके. So ये पूरा एक प्रोसीजर है आपका अटैक फेज का. Okay. So through this, you can simply attack over here in a proper way. It's all about information gathering. It's all about the testing part. And इसमें देखो लास्ट में यूजर टेक्स्ट फाइल मिल गई. देख रहे हो? बहुत देर लगा दी. So this machine, it was all your Linux machine, and we can try.